Assalamu alaikum. I will be discuss hypothalamus with you. What is this hypothalamus? As before hypothalamus, we just talked about the metathalamus, which is the part of the dorsalis diencephaly, and we talked about the thalamus, which is again the part of the dorsal diencephaly. But here we will be discussing the hypothalamus, which is again the part of diencephalon, but the ventral part. As its name itself suggests that it lies below the this your it lies below the, if you can see in the picture, it lies below the, this is your thalamus and this is your hypothalamus. It lies below the thalamus, your hypothalamus, this is your hypothalamus. It lies below the thalamus, being separated from the thalamus by means of this sulcus. This sulcus is called as the hypothalamic sulcus. This sulcus is called as the hypothalamic. Most of the part of the hypothalamus is hidden, but some part is visible, and these visible parts are present in the interpeduncular fossa. This is your interpeduncular fossa. This is your interpeduncular fossa. This fossa is your interpeduncular fossa. So your thalamus, it is the hypothalamus. It is the part of the ventral part of the diencephalon, separated from the thalamus by means of this hypothalamic sulcus. Most of its part is hidden, but some is evident in the interpeduncular fossa, and it forms the, on its medial side you have the lateral wall of the third ventricle. अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, इसको एपेंडाइमा of the third ventricle, since this is the medial surface of the cerebrum, so here the ependyma of the third ventricle will be attached. Here the ependyma of the third ventricle will be attached. If we talk about the boundaries, laterally it will be in contact with the internal capsule. Laterally मतलब ये अगर हम उठाएंगे, ये पोर्शन अगर हम उठाएंगे तो इसके पीछे क्या होगा laterally, इसको it will be having the internal capsule that will comprise your caudate and the lentiform. That will comprise your caudate and the lentiform. If this is your hypothalamus, if we will just take it off, the thing behind it will be your, or lateral to it will be the internal capsule. Fine. Then posteriorly it merges with the ventral thalamus. Posteriorly it merges with the ventral thalamus. पीछे से ventral thalamus के साथ we will be discussing in future classes what the ventral thalamus is. It will be merging with the ventral thalamus. Fine. Anteriorly it extends up to the lamina terminalis. This is your lamina terminalis. Anteriorly ये lamina terminalis तक जाएगा. Fine. And it will merges with the olfactory structures. It will merge with the certain olfactory structures. Then inferiorly it forms the structures in the floor of the third ventricle. ठीक है. Inferiorly it forms the structures in the floor of the third ventricle. That is they are the tuber cynarium. This is your tuber cynarium. Fine. Then this is your infundibulum, tuber cynarium, infundibulum, and mammillary bodies. Fine. Again I will tell you once more the boundaries of the hypothalamus. Laterally this is the medial surface of the cerebrum. If we will remove this, the thing lateral to it will be your internal capsule. That is the lateral. Then posteriorly here it will merge with the ventral thalamus, जो हम आगे पढ़ेंगे, and with the tegmentum of the midbrain. नीचे जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, tegmentum of the midbrain. Then anteriorly it will extend up to lamina terminalis and will merge with certain olfactory structures. Then inferiorly, ये है inferiorly, यहाँ से inferiorly क्या होगा, इधर तो ये है infundibulum. ठीक है, infundibulum होगा. ठीक है, और inferiorly इसको यहाँ पे mammillary bodies है. ठीक है, and this will be your tuber cynarium. This will be your tuber cynarium. Inferiorly it will be having the infundibulum, tuber cynarium, and the mammillary bodies. ये डायग्राम बहुत अच्छी है, अगर आप अच्छे से देखोगे. Superiorly it will be separated from the thalamus by means of this hypothalamic sulci. That is the superior relation. Posteriorly you will be having the ventral thalamus. Fine. And laterally you have the internal capsule.
Anteriorly it will be confined by the lamina terminalis, and inferiorly you will be having the infundibulum, tuber cyanarium and mammillary body. These were the boundaries. Then the subdivisions of the your hypothalamus. Subdivisions of your hypothalamus. Your hypothalamus is being divided into regions. You have three zones. You have periventricular, intermediate and lateral. You have periventricular, intermediate and lateral. Periventricular, intermediate and lateral. जो periventricular और intermediate है ना, they together are called as the medial. ठीक है. So you have medial zones and the lateral zones. You have medial zones and the lateral zones. Your subdivisions of the thalamus, hypothalamus, पहले इसको हिस्से होते हैं तीन. That is the periventricular, intermediate and the lateral. Then the periventricular and the intermediate together comprise your medial zone, and you have the lateral zone. If we see in this picture, your hypothalamus is also subdivided antero-posteriorly, आगे से पीछे. Antero-posteriorly, आगे से पीछे. It is divided into four regions. You have the preoptic region. Preoptic ये है ना optic chiasma, इसके आगे अगर हो गया तो हो गया pre. This area one is your preoptic region. Then you have the supraoptic second region. This is above the optic chiasma. So above होगा तो supraoptic. ठीक है. Then you have third region, that is the infundibulotuberal region. ठीक है. ये तीसरा region ये. This is your infundibulotuberal region. It includes the infundibulum. यहाँ पे इसको infundibulum के साथ connection होगा. ट्यूबर साइनेरियम के साथ कनेक्शन होगा. ठीक है. एंड द रीजन अबाउ इट. सो इनफंडिब्यूलोट्यूबरल रीजन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका इनफंडिब्यूलम के साथ भी कनेक्शन है एंड ट्यूबर साइनेरियम के साथ भी कनेक्शन. देन यू हैव द मेमलरी रीजन. दिस फोर्थ रीजन इज योर मेमलरी रीजन. It consists of the mammillary body and the region about it. ठीक है. This is your preoptic, in front of optic chiasma. Supraoptic, above optic chiasma. Third is your infundibulotuberal, that is above the infundibulum and the tuberum, tuber cyanarium. Then fourth is your mammillary region, which is present above the mammillary bodies. जो ये है ना सब इनका होता है. जो इसमें प्री ऑप्टिक रीजन है इसका origin होता है from the tail and cephalon. Now if we talk about the main subdivision of the hypothalamus, we divided it into medial zone and the lateral zone. Talking about the nuclei in the medial zone. medial zone में क्या क्या nuclei होंगे? medial zone में इसके पास nuclei होंगे preoptic. This is your dark blue color का जो है ये blue color का. This is your preoptic nuclei in the वो आपको मैंने दिखाया वो किधर होता है. Then you have the paraventricular nucleus. Then you have this is your paraventricular nucleus. ठीक है. Then you have your suprachiasmatic nucleus, वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है. Then you have your anterior nucleus. ठीक है. Then you have your anterior nucleus. This is your anterior nucleus. And you have your arcuate nucleus. Where is the arcuate nucleus? Arcuate nucleus or infundibular nucleus. This is your arcuate nucleus. ठीक है. So nucleus in the medial zone include your preoptic, paraventricular, anterior nucleus, infundibular or the arcuate nucleus. They are the nuclei in the medial zone. You have I think few more in the medial zone, that is the posterior nucleus. ये है posterior nucleus. Then you have the mammillary body. ठीक है. और mammillary nucleus. Then you have बस these are the nuclei in the medial zone. medial zone में देखो medial zone है, lateral zone है. Now what are the nuclei in the medial zone? You have the preoptic, fine. You have the paraventricular, you have the anterior nucleus, you have the mammillary body, you have the posterior nucleus, you have the infundibular nucleus. So these are the nucleus in the medial zone. Then nuclei in the lateral zone, they contain a diffuse collection of cells that extend into the supratuberal, tuberal and mammillary regions. ठीक है. जो हमने पहले वो चार रीजन्स एंटीरो पोस्टीरियरली बोले थे, उसमें से सिर्फ प्री ऑप्टिक आएगा आपका मीडियल जोन में. बाकी जो है सुप्रा ऑप्टिक, ट्यूबरल और मेमोरी रीजन्स में आएंगे जो न्यूक्लिया इन द लेटरल जोन होंगे. उसमें कौन कौन से न्यूक्लिया होंगे? उसमें होगा सुप्रा ऑप्टिक,
ये है जी सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस आपका, ठीक है। फिर है ट्यूबरो मेमोरी, यहाँ पे ट्यूबरो मेमोरी होगा, वो होगा। और आएगा आपका लेटरल ट्यूबरल न्यूक्लियस, और आएगा आपका लेटरल ट्यूबुलर न्यूक्लियस. So your medial zone will contain the preoptic. You will have to make a mnemonic for that to remember these nuclei. Then the anterior nuclei, paraventricular nuclei, posterior nuclei, mammillary nuclei, and the infundibular nuclei. They are the nuclei in the medial zone. In the lateral zone, you have the nuclei concerned with the supraoptic, tuberal, and mammillary regions. So we will be having the supraoptic region, tuberalo-mammillary nucleus, and the lateral tuberal nuclei. Then the connections of the hypothalamus. It is connected with the visceral functions, hypothalamus. So it will be have connections with the limbic system, reticular formation, and autonomic centers in brain and spinal cord. Then it will be having connections with the, it will release secretions in the bloodstream as well as spinal fluid, cerebrospinal fluid. जो आपका हाइपोथैलेमस है ना, इट हैज़ द विजुअल फंक्शन, सो इट हैज़ कनेक्शंस विद द लिम्बिक सिस्टम एंड द रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड ऑटोनॉमिक सिस्टम्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. Now your hypothalamus will receive afferents. It will receive afferents. These afferents will come from the somatosensory pathways. It will come from the visual centers in brain and spinal cord. These afferents will come from the visual input, olfactory input, limbic system, neocortex, and thalamus. It will receive afferents from the solitary tract. लाएगा ये टेस्ट इम्पल्स सॉलिटरी ट्रैक के थ्रू. ये लाएगा इससे असेंडिंग पाथ से लाएगा, असेंडिंग सोमेटोसेंसरी पाथवे से लाएगा एफरेंट्स. फिर आएंगे एफरेंट्स फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी विजुअल इम्पल्स से आएंगे, ठीक है. लिम्बिक सिस्टम से इसके पास एफरेंट्स आएंगे ना एफरेंट्स, फाइन. Then it will receive afferents from the cortex also in the form of corticohypothalamic fibers, fine. Mainly these afferents will be from the frontal lobe. They will be from the frontal lobe. Then for the efferents, hypothalamus करेगा fibers and autonomic centers of brain and spinal cord को, since it will has the visceral functions, ठीक है. तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटरी ट्रैक्ट इसमें इन्वॉल्व होगा, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस होगा इन्वॉल्व, ठीक है. तो ये सेंड करेगा फाइबर्स टू द स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो, ठीक है. अगर इसमें इफरेंट्स आ रहे तो एफरेंट्स आ रहे तो इफरेंट्स भी वापस जा रहे हैं फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू द फीसरल सेंटर्स इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. देन इट विल गिव न्यूरो एंडोक्राइन इन्फ्लुएंस ऑन द हाइपोफाइसिस सेरेब्राई. ये हाइपोफाइसिस सेरेब्राई और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, ठीक है. कैसे कंट्रोल करता है ये हाइपोफाइसिस और पिट्यूटरी ग्लैंड को? जो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में होते हैं वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन्स. ये कैसे कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस? These two are synthesized in the supraoptic and paraventricular nuclei of the hypothalamus. फिर ये कैपिलरीज के थ्रू जाते हैं into the this posterior part of the pituitary gland. So it has an control. Your hypothalamus has a control on the posterior part of the pituitary gland. It forms the two hormones, that is the vasopressin and the oxytocin, and via the capillaries they just secretions then go, these two hormones go into the posterior पिट्यूटरी. सो इनका एक कंट्रोल होता है, हाइपोथैलेमस का एक कंट्रोल होता है आपकी पिट्यूटरी पे. सिमिलरली इट कंट्रोल्स द एंटीरियर पार्ट, दैट इज द एडिनोहाइपोफिसिस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो. कैसे? ये कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है, जैसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, देन यू हैव द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर. हर किसी का रिलीजिंग फैक्टर करता है. उसी फैक्टर से क्या हो जाता है, हार्मोन कितना निकलेगा, कब निकलेगा, दैट इज बीइंग डिसाइडेड, ठीक है. दैट सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज द हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, जिसके थ्रू ये
एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. सो इट हैज़ अ बिग इम्पैक्ट ऑन द functions of the pituitary gland. This is the picture for that. As you can see, this is the paraventricular nucleus, this is the supraoptic nucleus. Then they both form the supraoptic hypophyseal tract going to the posterior part of the pituitary gland and give the secretions in the form of vasopressin and oxytocin. See, this is your thalamus, this is your hypothalamic sulci, this is your hypothalamus. Then these are your we will discuss it in detail later, this is not in your area of concern. So this was about the hypothalamus. Now we have the functions of the hypothalamus. What functions does hypothalamus have? It is important for the survival of humans. Fine. It has close coordination with the higher centrals, brain के साथ, cortex के साथ, prefrontal cortex के साथ इसका connection होता है. Then फिर the autonomic centers of brain and spinal cord. तो क्या क्या किस किस में help करता है? खाने पीने में, ठीक है. It is responsible for feeling of hunger and satiety. hunger भूख है, satiety पेट भर के है, तो it will give you the feeling of hunger as well as satiety. फीडिंग सेंटर लेटरली होता है और आपका सटाइटी सेंटर मीडियली होता है. लेटरली आपका फीडिंग सेंटर होता है, लेटरली बोलता है मुझे खाना है. मीडियल सेंटर जो इसका वो बोलता है आई एम फुल. ठीक है. सो इट हेल्प द ईटिंग एंड द ड्रिंकिंग बिहेवियर. देन इट इज हैज़ रोल इन द सेक्चुअल एक्टिविटी. इट हैज़ रोल इन द सेक्चुअल एक्टिविटी. फाइन. मेल्स में भी और फीमेल्स में भी. इट हैज़ इफेक्ट ऑन गेमेटोजेनेसिस. ठीक है. इसको गेमेटोजेनेसिस में इफेक्ट होता है. देन ऑटोनॉमिक एक्टिविटी ANS में भी इसका रोल होता है, इसका इफेक्ट होता है कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड एलिमेंट्री फंक्शंस पे भी. ठीक है. then it has an important role in emotions like fear, anger, pleasure. That is all because of your hypothalamus. It has control on endocrine activity, as I have already told you. Oxytocin and the antidiuretic hormone, they are under its influence. Then you have the various releasing factors from the anterior pituitary. Fine. It has a role in how the person can combat the stress. कैसे एक इंसान स्ट्रेस के साथ डील करेगा, उसमें भी हाइपोथैलेमस का रोल होता है. देन इट कैन रेगुलेट द बॉडी. इट एक्ट्स एज अ थर्मोस्टैट टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. इट इज़ अ बायोलॉजिकल क्लॉक. ठीक है. It maintains the cycle of sleep and waking. That is the most important thing what the hypothalamus has to do. It acts as a biological clock. ठीक है. इसका कौन सा न्यूक्लियस इसमें ज़्यादा पार्ट लेता है? That is the suprachiasmatic nucleus. Fine. Then about the clinical anatomy, you have Kleene-Levin syndrome. ठीक है. उसमें क्या होता है, जो आपका मीडियल पार्ट होता है हाइपोथैलेमस का, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी. उसकी वजह से क्या होता है, सेटाइटी, मतलब आई एम फुल. ठीक है. वो उसमें प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. ठीक है. और पेशेंट को नींद नहीं आएगी. ही विल बी हैविंग हाइपरफेजिया. वो खाएगा सिर्फ. ठीक है. वो खाएगा सिर्फ. यू मस्ट हैव सीन ऑफ कैरेक्टर इन द योर आई थिंक इट वाज इन महाभारत, कुंभकर्ण. So it Kleene-Levin syndrome is that only. He will sleep more, he will eat more, then he will be having a lot of sleep, hyperphagia. Similarly, you have syndrome of inappropriate ADH, SIADH. वो क्या होता है, अगर सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस में गड़बड़ हो गया, उसकी वजह से हो जाएगा आपका जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है. दैट इज इट. इनफ.